Last time we looked into the cell potential for a standard cell. हमने ये कहा था कि if we want to check the spontaneous nature of a reaction, we can find out the cell voltage by subtracting the anode standard potential from cathode. If it is greater than zero, that means your reaction is spontaneous. If it is less than zero, then you have to reverse the reaction in order for it to be considered as a spontaneous reaction. So we'll start with the example related to this. So सबसे पहले we have an example which says that it says one half up. Is the screen visible? Is the top half of the screen is visible to you guys? Yes, one half an electrochemical cell consists All right, of. all right. So one half of an electrochemical cell consists of pure. I am unable to see why is that. All right. So one half of electrochemical cell consists of pure nickel electrode in nickel solution having nickel ions as 2 plus and cadmium having cadmium ion as 2 plus. If the cell is a standard one, what is meant by the standard cell? Sir, she, Sorry? the Sir, hydrogen. hydrogen, hydrogen. नहीं SHE standard hydrogen electrode नहीं standard Uh, cell जी sorry सर जिसमें प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर अराउंड अबाउट 273 केल्विन हो 273 Kelvin तो ना हो it is this cell में you have 25 degrees centigrade as the temperature yes sir and 25 the metal is immersed in 1 molar concentration of its own ions. ये दो conditions लाजमी है standard cell के लिए ठीक है nickel metal is immersed in 1 molar solution of its own ions at 25 degrees centigrade. It's a standard cell. Similarly, cadmium ions immersed in its own cadmium metal immersed in its own ions having a concentration of 1 molarity at 25 degrees centigrade. It's a standard cell. और जो हमने equation देखी थी V cathode standard minus V anode standard gives you standard voltage of the standard cell. This is only valid for standard cells. ठीक है ये जो EMF series है where you see standard electrode potential से मुराद ये है कि it is measured at 25 degrees centigrade and in 1 molar concentration of the respective ions. ठीक है ये condition जरूरी है for this voltage to be correct. Now, if the cell is standard one, write the spontaneous overall reaction and calculate the voltage that is being generated. So, क्या you can do this? ठीक है तो I'll give you few minutes. Find out the first thing you have to find out the spontaneous overall reaction की overall reaction की equation लिखें and calculate the voltage that is generated as a result of this electrochemical cell. So you have about 2 minutes, 2 minutes or 3 minutes, let's say. Solve it and let me know. All right, and then we'll discuss the solution.
G done? Anybody has solved it? सर 0.153 वोल्ट है. पहले तो आप मुझे इक्वेशन बताएं ना क्या है. इक्वेशन सर निकल जो आयन है निकल 2 प्लस आयन प्लस कैडमियम और प्रोडक्ट साइड पे निकल Ni+2 सॉरी सर निकल प्लस टू होता है. Ni2 प्लस कैडमियम प्रोडक्ट साइड पे है निकल निकल प्लस प्लस. कैडमियम 2 प्लस. यस सर. अच्छा चलिए सर आंसर और है 0.153. 0.153. All right, let's see. So since we see cadmium is lower in the series as compared to nickel, तो हमने ऑटोमेटिकली कैडमियम को एनोड कंसिडर कर लिया और निकल को कैथोड कंसिडर कर लिया. And if you see cadmium is dissolving away and nickel gets deposited on the nickel electrode. अच्छा, based on this, we write the equation. This is the equation for cadmium getting oxidized. Cadmium 2 plus में convert हो रहा है by giving away 2 electrons, and nickel is getting reduced by acquiring those 2 electrons. Now, if we sum up these 2 electrons, we'll have this equation: cadmium acting as the anode and nickel acting as the cathode. And the standard cell potential equation that we have is V standard of cathode minus V standard of anode. Standard potentials are taken from the electrochemical series. And if you plug in the values, the voltage comes out to be plus 0.153 volts. Clear enough? Yes sir. All right. So the answer is reaction to occur spontaneously. This should be positive, which is positive, so the reaction will take place spontaneously. Now, the important thing is, so far the EMF series that we have seen is built up upon the fact that the, the standard conditions prevail. That means 25 degrees centigrade and 1 molar concentration of respective ions. Let's say the solution in which the electrode is being placed deviates from any one of the conditions. Would the EMF series be still valid? No. In such a condition, you'll have to use what is known as Nernst equation. Let's say you have a generalized chemical equation written over here. A and B are the reactants having their respective moles as A and B, and capital C and capital D, they are the products, and these two are the respective moles for the products. For such a general electrochemical reaction, the cell potential will depend upon the absolute temperature and the activities of reactants and products according to Nernst equation. What is activities? We'll come to know of it. So far you had seen this part of the equation, which is for the standard conditions. V2 standard minus V1 standard, or V cathode standard minus V anode standard. That is what you had seen so far. This portion basically deals with the condition that deviates from the standard portion. 2.303 is a constant, R is universal gas constant, T is the absolute temperature of the solution, N is number of electrons that are involved in the process for 1 mole. Faraday's constant is represented by F. Then you have log of the upper portion represent products and the lower portion basically represents reactants. And AC, this portion, is
activity of the compound C. AD is the activity of compound D. Similarly, AA is the activity of material A, and AB is the activity of material B. The powers over here C, D, A, and B, they are basically the number of moles for the respective compound or element or metal that is present in the electrochemical reaction. Is the equation clear? सर एक्टिविटी जो आप बोल रहे हैं सर वो मतलब किस तरह कैलकुलेट होगी? वो मैं बताता हूँ. इक्वेशन में बाकी टर्म्स equation क्लियर है. जी। ऑलराइट, ग्रेट. सो सर ये नीचे जी. वाला ये जो टॉट की तरह साइन है वो कौन सा? एन के This साथ, स्मॉल एन के साथ. Faraday's यस सर. Faraday's constant. ओके सर. सर साइन को क्या कहते हैं? Faraday's constant. सर वही बोलेंगे. ठीक है, थैंक यू सर. This is basically F written in a different what do you say style. यस I don't know if there is a name for it, but यस normally this is known as Faraday's constant. All right. So Yes. activity for solids which are pure is 1. For liquid water is 1. तो अगर you have solid या liquid water है तो एक्टिविटी 1 हो जाएगी. एक्टिविटी 1 होने का मतलब क्या होगा? ये टर्म जो है ये मैं लिखूं या ना लिखूं, इट वुड बी इमटेरियल. 1 to the power anything would still be 1 multiplied by anything. It won't affect any, it won't change the value. So whether if I have solid or liquid water, I write it over here or I don't write it over here, it doesn't matter. Clear enough? Liquids and Molar ions. concentration. G. Molar concentration. बेटा जो आपको अभी बताया, that is that clear to you? Solids और water के केस में clear है? No सर sir, रिपीट ये करें. मुझे नहीं समझ आया. Let's say यहाँ पे निकल है और यहाँ पे कैडमियम है. दोनों क्या है? Solids. तो सॉलिड्स के लिए आप यहाँ पे ये भी कट जाएगा और ये कैडमियम भी कट जाएगा. आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज इमटेरियल. ऑलराइट. Sir. सिमिलरली अगर इक्वेशन के अंदर वाटर है तो फिर उसकी एक्टिविटी लिखने की भी जरूरत नहीं है. क्लियर? Okay sir. लेकिन इफ यू हैव एनी लिक्विड्स और आयंस प्रेजेंट, अगर आपके पास यहाँ पे लेट्स से CD+2 आयंस है और यहाँ पे Ni+2 आयंस है, तो then you would replace the activity of D. The activity of D would be replaced by the molar concentration or molarity. 0.5, let's say it is, to the power of number of moles of Ni+2, which is in this case 1. All right. Similarly, if cadmium has a molarity of 0.6, तो यहाँ पे आप रिप्लेस कर देंगे 0.6 के साथ. And similarly, the power is basically dependent upon the number of moles. Clear enough? यस सर. Yes. Or for gases, the activity is replaced by the pressure. All right. यस सर. अच्छा. R is 8.314. Faraday's constant is 96500 coulombs per mole, or which is the charge per mole, and in a mole you have this much of electrons. So this is the equation. Now let's say I have this equation just to make you understand. I have a solid M1 and ions Sir, of एक मिनट another last वाली phase. slide दीजिएगा. G. Okay sir. So you have a solid S1 is reacting with
another material having ions in the ionic form, resulting in the formation of ions for material 1, and the material 2 converts into the solid form. Now, the standard equations in the reduction format are written over here. मटीरियल 2 के लिए भी है, मटीरियल 1 के लिए भी है, इनके स्टैंडर्ड वोल्टेजेस भी लिखे हुए हैं. If I apply the Nernst equation over here, आप ये देखें कि this is the equation for the standard cell. ठीक है, मैंने V2 minus V1 क्यों लिखा है इधर? सर कैथोड माइनस एनोड होता है. तो इस इक्वेशन में कैथोड कौन सा है? M2 सर. जी बिल्कुल. So V2 minus V1, V cathode standard minus V anode standard. अच्छा, R T N F. Previously it was written 2.303, a constant was written over here, and you had log base 10. So if you have to replace log base 10 with the natural log, you will have to get rid of this 2.303 as the constant. All right. So 2.303 log of x is essentially equivalent to ln x. तो अगर आप नेचुरल लॉग यूज कर रहे हैं तो आप इस कांस्टेंट को यहाँ से रिमूव कर देंगे. नाउ यू हैव प्रोडक्ट्स ओवर हियर, और प्रोडक्ट्स में आपके पास एक ही आयन है विच इज M1n+. इसकी कंसंट्रेशन आप लिखेंगे टू द पावर 1 क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 है. सिमिलरली इन द रिएक्टेंट्स you would write the number of moles of M2n+, और उसकी पावर भी 1 होगी क्योंकि M2 के भी number of moles 1 है. Once you solve this, you can find out the corresponding voltage for the cell at the respective temperature and concentrations of the solutions. When you say at 25 degrees centigrade, which is room temperature, this equation basically, if I write down the equation over here, this would be the equation at 25 degrees centigrade for non-standard concentrations. If you see, R would be a constant, temperature would be a constant, Faraday's constant is a constant. So if you have to express this and you are expressing in terms of log, so you have this 0.0592 comes from 2.303 into 8.314 multiplied by 298 divided by 96500. This becomes constant, which is being replaced by 0.0592 and is number of electrons, and you have expressed the equation in the log form. All right, the generic equation is clear to you guys? जी सर, ये समझ आ गई. ये बताएं कि सॉलिड्स और H2O के लिए हम 1 क्यों रखते हैं? एक्टिविटी जो आप बता रहे हैं, 1 की वजह क्या है? जी सर, वजह क्या है? It's a lot of chemistry. It would very. जितना मैं समझ रहा हूँ, मेरे ख्याल से मतलब कंसंट्रेशन की बात हो रही है, तो हम सॉलिड्स वगैरह की तो इतनी कंसंट्रेशन नहीं होती. मतलब वो तो तकरीबन नहीं, it's not that simple. It is basically linked to the chemical potentials and the Gibbs free energy, the tendency to move. A simple अल्फाज में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो it is the tendency to move from the equilibrium away. It is the tendency to move in a certain direction. एक खास कंसंट्रेशन से दूसरी कंसंट्रेशन पे जाने की टेंडेंसी है जो कि रिप्रेजेंट होती है, but it would be very difficult to make you understand without the proper background of thermodynamics. Materials thermodynamics अगर आपको background नहीं होगा ना गिब्स एनर्जी और chemical potentials का, तो it would be difficult to make you understand. But it is what you say,
the tendency to move away from the equilibrium conditions. इस तरह समझ लें इसको, ठीक है? तो सर ये गैसेस और ये जो बाकी आयंस है इनकी तो टेंडेंसी ज्यादा है ना, तो इनकी वैल्यू कम है हो जाती है। इनकी वैल्यू डिपेंडेंट होगी इनकी कंसंट्रेशन के ऊपर। हाँ, कितना कंसंट्रेशन सर, कंसंट्रेशन तो 1 से कम ही होगी ना, 1 तो प्योर सब्सटेंस होता है। हाँ, तो मतलब है इन बाकी चीजों की टेंडेंसी सॉलिड से कम है इक्विलिब्रियम में। अच्छा चलें, छोड़े। नहीं, ये एक्टिविटी जो नंबर है, इट इज नॉट गिविंग यू कि अगर ये वैल्यू कम है तो टेंडेंसी कम है, ये मैं नहीं कह रहा आपको। अच्छा, डोंट टेक इट एज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप कि एक्टिविटी मैं ज्यादा है तो direct- इसका मतलब ज्यादा एक्टिव है। दिस इज नॉट व्हाट आई एम टेलिंग, ठीक है? रिलेटेड है मगर डायरेक्ट रिलेशनशिप। हाँ, मतलब यू कैन से कि ये रिलेटेड है टू the value. I'm not talking about the value, exact value कि अगर ज्यादा है तो ज्यादा है या कम है तो कम है. It is basically the activity जिसको आप डिफाइन करते हैं, ये केमिकल पोटेंशियल से रिलेटेड है किसी स्पीशी के, ठीक है? ठीक सर, ठीक। बट इट डजंट मीन कि अगर एक्टिविटी की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब है कि उसकी एक्टिविटी फिजिकली उसकी एक्टिविटी भी ज्यादा है. इट डजंट वर्क दैट वे, ठीक है? ठीक सर। This you already know. So let's have a look at this example again. We have an electrochemical cell जिसमें we have cadmium ions and nickel ions. 25 degrees पे cell है, लेकिन it is not the standard cell क्योंकि अब you have the concentration of cadmium ions is 0.5 and nickel ions is 10 raised to power minus 3. Now you have to determine, is the spontaneous direction still the same for the standard cell or has it changed? So could you find it out? If you want, I can write down the equation for you over here. For a non-standard cell, it is V cathode standard minus V anode standard minus, since it's 25 degrees centigrade, I would write it activity of product divided by activity of reactant, and obviously the number of moles are considered to be 1 in this case. G, can you find it out? कर सकते हैं Sir, we can try. G, let's have 2 minutes कि आप इसको सॉल्व कर लें, 2-3 minutes. Sir, n क्या होगा? N is number of electrons. So इसमें 2 होगा. G for a mole. Okay, sir. Done, sir. Very good. अच्छा, let me write down कि आपने क्या, what have you found out. ठीक है, तो first if you could tell me कि what is your cell voltage? सर ये 10⁻³ लिखा हुआ है ना? जी 10⁻³ लिखा हुआ है. Who had मेरा तो 0.073 कुछ आ रहा है. 0. Yes, sir. 0.073 minus 0.073. minus 0.073. अच्छा,
मेरा और सर -3 लगा। और सर ये डेल्टा वी जो है वो 0.153 है। डेल्टा वी तो पूछ लो क्या है। यस सर, डेल्टा वो वी इज 0.153। 0.153। अच्छा, और रिएक्शन कैसे हो रहा है? इक्वेशन क्या है, जल्दी बता दे। मेरे मुताबिक तो रिएक्शन उसी तरह ही हो रहा था फिर जिससे पहले सर वाला। इसी को फिर माइनस करेंगे ना सर। ये जो आपने वैल्यू लिखी है 0.0592 और अपॉन n आ जाएगा, और फिर लॉग की वैल्यू पुट बेटा कर देंगे 10 पावर बेटा, आई 3। एम आस्किंग यू द सेल पोटेंशियल, डोंट मेक मी सॉल्व द न्यूमेरिकल, जस्ट गिव मी द वैल्यू ऑफ द सेल पोटेंशियल। कि सेल पोटेंशियल क्या है? सर इक्वेशन अप्लाई करने के बाद मेरी जो आ रही है वो 0.0731 वोल्ट्स आ रही है। 0.0731 वोल्ट। हाँ, ऑलराइट, ये और सब कुछ अप्लाई करने के बाद मैंने स्ट्रिंग ठीक हो गया, सेल पोटेंशियल वही होगा ना। अच्छा, और आपकी इक्वेशन जो है उसमें व्हाट इज योर एनोड, व्हाट इज योर कैथोड? सर वही वाला है। Cadmium is acting as the anode and nickel is acting as the anode. Sorry, cathode. ये क्या तो अच्छा, चले, let's see. For the sake of argument, let's say that nickel is oxidized, that means it is acting as the anode, and cadmium is reduced, that means it's acting as the cathode. This is the assumption that I have taken. All right. Now, based on this, I have developed this equation कि cadmium जो है ये reduce हो रहा है and nickel is basically giving away electrons, so it is getting oxidized. This is the equation that I have assumed. Based on this equation, cadmium becomes my cathode and nickel becomes my anode. So V cathode standard minus V nickel standard, which is the anode, RTNF natural log of nickel divided by cadmium concentration. अगर log की फॉर्म में लिख रहा हूं तो I would use this constant. So this is minus 0.043 the potential of cadmium. This is the potential of nickel. 0.0592 divided by 2, which is electrons. Log of 10 is for -3. -3 is the concentration of Ni plus 2 ions since it is in the products. And divided by 0.5, which is the concentration of C2 plus. This gives me an answer of minus 0.073 volts. What does this mean? इसका मतलब स्पॉन्टेनियस नहीं है। और इसका मतलब कि मेरी assumption क्या है? जीरो के लिए है सर, ये मतलब जीरो के नजदीक नेगेटिव साइन हम ये बोल सकते हैं स्पॉन्टेनियस नहीं है। अगर सर तकरीबन जीरो ही है तो बेटा इतना तकरीबन से फर्क काम, डोंट वर्क ऑन तकरीबन। इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन होगा इसको आपको एनर्जी देनी पड़ेगी प्रोसीड होने के लिए। बेटा ये नेचुरली नहीं होगा, स्पॉन्टेनियसली। हाँ जी, स्पॉन्टेनियसली नहीं होगा। मेरी assumption क्या है? इसका मतलब है कि आई हैड अज्यूम कि जब मैं निकल और कैडमियम के इलेक्ट्रोड्स को इन कंसंट्रेशन में कनेक्ट करूंगा तो इट वुड बी opposite reaction that would be taking place. Nickel would be converting into nickel ion would be converting into nickel and cadmium would be oxidizing. तो निकल जो है वो रिड्यूस हो रहा होगा और कैडमियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा. My assumption, initial assumption stands incorrect. Clear? यस सर। अच्छा. Now tell me one thing. Natural log of x का x के साथ रिलेशनशिप क्या है? If x goes up, what happens to the natural log of x? Sir, it will सर वो भी decrease. ऊपर ही जाएगा। वो भी ऊपर जाएगा. It would also increase. Alright. So अगर यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो नेचुरल लॉग की वैल्यू क्या होगी? वो भी ऊपर हो जाएगी. Increase. ठीक है. जी सर। और इसका मतलब है ये पूरा फैक्टर जो है ये इंक्रीज करेगा.
इज इट अच्छा। और लेकिन इस पूरे का इफेक्ट ये होगा कि सेल पोटेंशियल जो है वो कम हो जाएगा, बिकॉज दिस वुड बी subtracted from the standard potentials. Clear? जी सर। तो दूसरे लफ्जों में, if the value of this ratio is increasing, the cell potential would go down. Clear enough? जी सर। अच्छा, और इस वैल्यू को इंक्रीज करने का एक तरीका ये हो सकता है कि इफ आई इंक्रीज Ni2+ या आई डिक्रीज Cd2+, ऐसे ही है। जी सर। यानी कि अगर Ni2+ ऊपर जाएगा तो सेल पोटेंशियल जो है वो कम हो जाएगा, और अगर कैडमियम 2+ कम होगा तब भी सेल पोटेंशियल जो है वो कम हो जाएगा। क्लियर ये चीज? इन अदर वर्ड्स, सेल पोटेंशियल कम होने का मतलब ये है कि दिस इज गोइंग बैकवर्ड्स, द रिएक्शन इज गोइंग बैकवर्ड्स, ऐसे ही है। सो if I have to reduce the cell potential, I can do so by increasing X, which is the product, or by decreasing Y, which is the reactants. और होता भी ऐसे ही है कि Yes, if I increase the concentration or of Cd2+, आपका reaction backwards जाना शुरू हो जाता है। Similarly, if I decrease the concentration of Ni2+, आपका reaction जो है वो forward से backward जाना शुरू हो जाता है। Clear enough? रिवर्स होता है सर, जी रिवर्स रिएक्शन फेवरेबल हो जाता है। जी बिल्कुल। Alright? Now, before we go on to the break, just this galvanic series, we'll get to know of this galvanic series. वो ये है कि EMF series was generated under highly idealized conditions. Idealized conditions क्या थी? That you had 25 degrees centigrade temperature, 1 molar solution of respective ions for the respective electrodes. ये बड़ी ideal conditions है जिसकी utility बड़ी limited है. Although it indicates the relative reactivities of the metals, लेकिन it is highly unlikely that you will have standard conditions in real time. So a more realistic and practical ranking is provided by galvanic series, which ranks the reactivities of metals or alloys in seawater. Seawater is basically most corrosive, or generally the one of the frequently encountered corrosive environment is that of seawater. तो हम उसमें मुख्तलिफ metals को टेस्ट करते हैं and we rank them according to the severity of their corrosiveness. So if we look at different materials, in this direction, materials are inert or more cathodic. When I say more cathodic, that means they are more inert. And in the bottom direction, materials are more anodic. That means they are more active. Active से मुराद ये है कि उनकी oxidation ज़्यादा तेजी से होगी. So alloys near the top are cathodic in nature and unreactive, not unreactive. Yes, to some extent there are unreactive metals there, but the reactivity decreases in the opposite, in the upward direction. Whereas if you move towards the bottom, the materials are most anodic. That means they are more prone and more aggressive towards the corrosion in the seawater. No voltages are provided because जी शिप्स और सबमरीन्स बनाई जाती हैं। जी हम तो वैसे भी जो मटेरियल्स होते हैं, मतलब कि जो भी स्टील होता है या आयरन होता है, हम उसको प्रिवेंट करते हैं कि पानी ना लग जाए क्योंकि वो कोरिजन हो जाती है। तो ये तो रहता ही पूरा दिन या रात, या मतलब कि उनका काम ही ना पानी में होता है। तो वो कौन से मटेरियल से बनाई जाती हैं, कौन से फेवरेबल मटेरियल से जो मतलब कि उनको प्रिवेंट करता है कोरिजन ना हो और उनमें डैमेज भी ना हो? बहुत से मटेरियल है शिप्स में कोरोजन प्रोटेक्शन जो है ना वो सिर्फ मटेरियल से नहीं होती, देयर आर प्रिवेंटिव मेजर्स दैट आर बीइंग टेकन. मटेरियल तो स्टील यूज कर रहे होते हैं, देयर आर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील्स दैट आर बीइंग यूज्ड, बट इट इज not that you use a material which doesn't corrode or corrode very slowly. There are other protective methods or methodologies that are being adopted. When we'll be concluding the session, we'll look into
the preventive portion also. All right, so there you will come to know कि सिर्फ material selection ही एक तरीका है corrosion रोकने का, या there are other method also, anodic polarization, cathodic polarization, या anodic protection, cathodic protection. There are multiple ways to protect. और ship में जो है ये नॉर्मली एक से ज्यादा प्रोसेसेस होते हैं जिनके थ्रू कंट्रोल किया जाता है. ठीक है, ओके सर. we'll have a look at that at the end of the chapter, probably on Monday. You'll look into preventive measures, और उन measures में आपको पता लगेगा कि there are multiple methods to protect. तो उसमें cathodic protection भी है, anodic protection भी है, and there are other methods also. Selection भी एक तरीका है, लेकिन there are other ways which are preferred much more than just the selection of the material. Clear? यस सर. ठीक है, तो have a break of few minutes and then we'll come back.